Hello everyone. Just give me a quick confirmation and then we'll start. So tomorrow's session is going to be a very quick, short session, short and crisp session. We'll talk about the most important images that will be asked to you in FMG exam, right? So are we live? Yes, I think we are live. So let's wait for a few minutes. Let's while the other students are joining in, then we'll start. All right. All right. Hello. Hi, Dr. Penidu. Penidu, Pendra. Hello. Hello. Good evening, Ayush. How are you? We'll start in 2 minutes. Meanwhile, how is your preparation going? How are you preparing for the FMG exam? Hello, Dr. ABM, Chamomile, Hope, Sayed. Hello, good evening, Parul. Good evening. So I have around 30 slides. So we have 30 images, little more than 30 images. Some slides have two images. We'll try to finish 30 images in 30 minutes, right? So I don't want to waste a lot of your time also. We'll try to finish just images. What is the most important question that is asked? Name of the sign and the diagnosis, right? Good evening, Satya. Dr. Satya Bhardwaj, good evening. So which subjects are you having problem in? Tell me. Which subjects do you think are difficult to tackle? Which subjects are you having problem in managing? Sir, good evening, sir. Oh, hi, good evening, Dr. Hope. Sir, I'm Dr. Umar. Sir, physiology, medicine, and pharmacology. यार फार्मा में तो सिंपल है सर, सिराज सर ने जो पढ़ाया है बस उतना ही पढ़ना है। अगर सर के नोट्स मिल जाते हैं ऑफलाइन वाले तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं भी मिल रहे तो आर नोट्स उठा लो सर के, वही पढ़ लो डालो सारे। ठीक है। फिजियो में देखो, फिजियो में थोड़ा टाइम लगता है समझने का। सो फिजियो में आई वुड से कि एक बार अगर नहीं समझ आ रहा तो नोट्स के वीडियोस देखो, नॉट जस्ट नोट्स, उनके वीडियोस देखो एक बार। फार्मा एंड ऑफ था पारुले सिंह के। ठीक है। एंड मेडिसिन तो या देखो, मेडिसिन टेक्स टाइम एंड मेडिसिन फॉर एफ एम जी इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग टाइम इन। तो अगर एक ऑफलाइन क्लास अगर लगा सकते हो मेडिसिन की तो ऑफलाइन क्लास लगा लो और वही पढ़ते रहो बस बार 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 बार। Thank you, sir. पारुल इज आस्किंग फार्मा एंड ऑफ्थैल। सो फार्मा का एज आई टोल्ड यू पारुल, फार्मा में जो सिराज सर ने पढ़ाया है वो सब इम्पोर्टेंट है। सिराज सर बिल्कुल काम की चीज़ें ही पढ़ाते हैं। एंड बस उसके नोट्स पढ़ लो सर के। ऑफ्थैल की अगेन आई वुड से कि ऑफलाइन क्लास लगा सकते हो तो वो बेटर है। थोड़ा ऑफ्था समझने में टाइम लगता है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। नोट से केवल समझ नहीं आता है, मेन नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो एक ऑफलाइन क्लास लगा लो ऑफ्था की। ठीक है। So without further ado, let's start today's session. We'll talk about the most important images in radiology. Just give me a quick confirmation that my screen is normally visible, everything is right, my audio is visible, मतलब audio is audible. ठीक है सब? Anish, everything's fine? Yes, sir. Okay, Yes. thank you. So let's start with the first image. Now tell me guys, what is the first image? Both of them are almost a similar pathology. Let's talk about the first image. So what do you see here? You see that the arrows are pointing towards a visceral pleural line. ठीक है, they are pointing towards a visceral pleural line,
एंड व्हाट डू यू सी, क्या है आंसर बताओ, अनम्यूट करके बोलो फटाफट. व्हाट डू यू सी दैट देयर आर नो ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स लैटरल टू दिस विस्टल प्लूरल लाइन्स. व्हाट आर वी डीलिंग विद? दिस इज अ pneumothorax. Now, pneumothorax पे you get a question always. It is most of the time surgical rather than radiological. They ask you what is the management, right? So always remember that the management of pneumothorax does not depend on the size, but on the hemodynamic stability. So if the patient is hemodynamically stable, meaning BP is, systolic BP is more than 90, ठीक है, then what do you do? If the patient is stable, the answer is ICT insertion. If the patient is unstable, then the answer is needle thoracostomy. Needle thoracotomy. ठीक है, we put in a needle in the second intercostal space in children and fifth intercostal space in adults in a unstable patient. Unstable का मतलब है BP less than 90 mmHg, systolic BP. ठीक है, so this is the answer, pneumothorax. Now tell me what is the second spotter. You also don't see. बताओ फटाफट क्या है, एयर फ्लूइड लेवल है, कोई ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग्स नहीं है. Hydropneumothorax. तो सिंपल है, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स. यूजली हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स एक क्रॉनिक कंडीशन होती है, इन्फेक्शन इन अ सिक आईसीयू पेशेंट. आईसीयू पेशेंट दे रखा होगा हिस्ट्री में, उसको इन्फेक्शन वगैरह हो रहा होगा. दिस इज द हिस्ट्री यूजली गिवन. एक्यूट कंडीशन नहीं होती है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर इज ईदर एन आईसीटी इंसर्शन और अ पिगटेल इंसर्शन. दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ दिस. ठीक है, आगे बढ़े. ठीक है सत्या, गुड. दिस इज हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स. नेक्स्ट स्पॉटर. ठीक है, सो दिस इज शोइंग यू व्हाट, दिस इज शोइंग यू अ राइट मिडल कंसोलिडेशन. सॉरी, दिस इज शोइंग यू कंसोलिडेशन इन द राइट मिडल जोन. बट पूछेंगे कौन सा लोब इन्वॉल्व है. सो क्या दिखा रखा है एरो में, एरो में दिखा रहे हैं कि राइट हार्ट बॉर्डर इज विजिबल. ओके, व्हाट इज ऑब्सक्योर्ड, ऑब्सक्योर्ड इज राइट हेमी डायफ्राम. राइट हेमी डायफ्राम इज ऑब्सक्योर्ड. So what lobe is this present in? Where is this present in? This is present in right lower lobe. This is right lower lobe consolidation. And दूसरा बताओ कहाँ पर है? No. डॉक्टर ग्रे, दिस इज नॉट आरएमएल. आरएमएल में राइट मिडल हार्ट, राइट हार्ट बॉर्डर नहीं दिखेगा, जैसे कि इसमें दिख रहा है. सेकंड इज राइट मिडल लोब कंसोलिडेशन. इसमें यू कांट सी द राइट हार्ट बॉर्डर. सो दिस इज एक्चुअली राइट मिडल लोब कंसोलिडेशन. ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, हमें हमेशा राइट हार्ट बॉर्डर देखना है. अगर दिख रहा है राइट हार्ट बॉर्डर तो वो मिडल लोब पैथोलॉजी नहीं है, लोअर लोब पैथोलॉजी है. और अगर राइट हार्ट बॉर्डर नहीं दिख रहा मतलब वो राइट मिडल लोब पैथोलॉजी है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, what is this sign known as? Fataफat tell me. There is a cavity and a ball-like lesion within that cavity. So what is this? This is an aspergilloma. The diagnosis is aspergilloma. And what is the name of the sign? It is Monod sign. The name of the sign is Monod sign, aspergilloma. ठीक है. Similarly, एक और aspergillus की disease है, बताओ कौन सा साइन है ये. अनम्यूट करके बताओ साइन का नाम क्या है एंड डायग्नोसिस क्या है. कैमोमाइल. बताओ, अनम्यूट योरसेल्फ. ओके. नहीं किया है। हम्म. मैंने रेडियो नहीं किया है। कोई नहीं, ठीक है, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं. तो अगर आपको राइट मिडल लोब में ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिल रही हो एंड हिस्ट्री में क्या दे रखा हो, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. हिस्ट्री में आपको दे रखा होगा कि देर इज क्रॉनिक कफ विद स्प्यूटम विद फेटिगेबिलिटी एंड वेट लॉस. ठीक है, क्या क्या नहीं दे रखा होगा. यूजली हिस्ट्री ऑफ फीवर इज नॉट गिवन, लो ग्रेड फीवर वगैरह नहीं दे रखा होगा इसमें. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एस्थमा कभी कभी दे देते हैं, हिस्ट्री ऑफ एस्थमा प्रेजेंट. ठीक है, एंड ऑप्शंस में दिया होता है ट्यूबरक्लोसिस भी दिया होता है, ABPA भी दिया होता है, बैक्टीरियल निमोनिया भी दिया होता है. ठीक है, तो हमें क्या मार्क करना है इसमें, हमें इस केस में मार्क करना है ABPA. वाई? बिकॉज हिस्ट्री में फीवर नहीं दे रखा. टीबी एंड बैक्टीरियल निमोनिया में फीवर भी दे रखा होगा हिस्ट्री में. ठीक है, क्रॉनिक कफ स्प्यूटम टीबी में भी हो सकता है, वेट लॉस टीबी में भी हो सकता है. अब ABPA के
फेवर में क्या एडिशनल पॉइंटर है, हिस्ट्री ऑफ एस्थमा दे रखा है. सो हिस्ट्री ऑफ एस्थमा टेल्स अस दैट इट इज अ हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, एंड नेम ऑफ द साइन इज एक्चुअली फिंगर इन ग्लव अपीयरेंस. एंड डायग्नोसिस इज एबीपीए. एबीपीए की फुल फॉर्म है एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस. ठीक है. सो एबीपीए में हिस्ट्री ऑफ फीवर नहीं दे रखा होगा, बट कफ, स्प्यूटम, वेट लॉस सब दे रखा होगा. आपको लगेगा टीबी जैसा है, बट एस्थमा की हिस्ट्री दे रखी होगी उसमें, और फीवर नहीं दे रखा होगा. ठीक है. सो दिस इज एबीपीए. ओके गौतम, सॉरी, आई विल stick in English. Thank you. Thank you for letting me know. Right, so I was saying that this is ABP and not TB. Why? Because history of fever is not given. Chronic cough, sputum, weight loss, fatigability, right? And sign is finger and glove appearance. Diagnosis is ABPA. Next, let's talk about the important named sign in congenital heart disease. So, guys, tell me quickly what is the name of the sign and the diagnosis. Boot shaped sign. ठीक है, boot shaped heart. Where do we see this? Tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot में बताओ क्या क्या, what are the things included in tetralogy of Fallot? Four things are there. Tetralogy है. So there is right ventricular hypertrophy, pulmonary stenosis, oligement due to pulmonary stenosis. Then there is a VSD, and last thing, overriding Aorta. of aorta. Good. ठीक है. Now another thing that you have to remember, ये देखो, my cat is obstructing the view. Another thing that you have to remember is that in a tetralogy of Fallot, you will see reduced pulmonary blood flow. ओके. रिड्यूस पल्मनरी ब्लड फ्लो का क्या मतलब है, आपको जो आपकी लंग फील्ड्स हैं, दे विल अपीयर ब्लैकर, दे विल अपीयर मोर ब्लैक एज कंपेयर टू द नॉर्मल लंग फील्ड्स, जैसे कि इसमें दिख रही है. व्हाई? बिकॉज देयर इज देयर इज दिस इज पल्मनरी स्टेनोसिस होता है क्योंकि यहाँ पर, राइट. वेयर एज एक तो आपको पल्मनरी ब्लड फ्लो कम मिला, एंड दूसरा आपको हार्ट साइज इज नॉर्मल. हार्ट साइज इज नॉर्मल इन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट. इसका बिल्कुल उल्टा है, इसका ऑपोजिट है. ओके, दिस इज नॉट एग ऑन स्ट्रिंग बाय द वे. अ लॉट ऑफ पीपल मार्क दिस एज एग ऑन स्ट्रिंग. बताओ व्हाट इज दिस, नेम ऑफ द साइन एंड डायग्नोसिस. Epstein Barnum. Epstein दिस Anum. इज एप्स्टीन. दिस इज नॉट एग ऑन स्ट्रिंग. ठीक है. एग ऑन स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रिंग की तरह. इन एग ऑन स्ट्रिंग द पेडिकल विल बी नैरो. Here the pedicle is very wide. This is the big pedicle, and this is the big heart. So this is box shaped heart, and diagnosis is Epstein anomaly. Which element exposure, which drug exposure in pregnancy predisposes to this? Lithium. ठीक है. हिस्ट्री ऑफ लिथियम एक्सपोज, लिथियम इनटेक इन प्रेगनेंसी. ठीक है. समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड, दिस कार्डियोमेगली, हार्ट साइज इंक्रीज or box shaped heart is due to which heart chamber enlargement. So which heart chamber enlarges here? The right atrium enlarges. ठीक है. All of these are potential questions. Okay, good. Good, Satyam. Now, this is what is your egg on string. So you'll have a narrow pedicle and an enlarged heart. So this is egg on string appearance, and the diagnosis is TGA. Yeah. ठीक है. And this is everybody know this figure of 8 appearance, or snowman's heart, and diagnosis is what? Supracardiac TAPVC. Supracardiac TAPVC. ठीक है. Compare this to this. Now tell me what is this diagnosis? Congratulations, Doctor. Sir, I passed FMGE July with 164 marks. Radiology आपसे ही की थी. Thank you so much.
अभी नीट पीजी की तैयारी करनी है आपको, नेक्स्ट ईयर देना है नीट पीजी, एंड उसमें भी आपको क्लियर कराएंगे हम, ठीक है, डोंट वरी। तो टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अभी वी कवर्ड इट जस्ट नाउ, सो व्हाट आर यू सेइंग? Let's Heart decode shaped this. Enlarged heart is there, and the lung fields are appearing black. There is only one differential. This is Epstein anomaly. ठीक है, box shaped heart. While we are on box shape, tell me box shaped brain ventricles, where do we see? Asked in this INICT just now. Yesterday was the paper. Day before yesterday, sorry. Day before yesterday was the paper. Box shaped heart हो गया, box shaped ventricles. Where do we see box shaped ventricles? Try. कोई बात नहीं, डोंट वरी, ठीक है। बॉक्स शेप वेंट्रिकल्स आर सीन इन समथिंग नोन एज हंटिंगटन कोरिया। ओके, हंटिंगटन कोरिया। Okay, now let's next question. Coming to bone tumor. So tell me, what is this bone tumor? I'm giving you a 13-year-old child, right? What is your diagnosis? 13-year-old child में you see a lytic lesion in the greater tuberosity, and similarly you see another lytic lesion in the epiphysis of tibia. Chondroblastoma. Yes, this is chondroblastoma. So chondroblastoma, what are the buzzwords for us? It is number one, a lytic lesion, happens in children, and involves the epiphysis. Epiphysis or apophysis. What are apophysis? Basically trochanters and tuberosities. Now what is this showing you? This is showing you chicken wire calcification. This is seen in chondroblastoma. Okay. Now tell me another side note. Let's revise another type of calcification. Sorry. Fried egg appearance. Fried egg appearance of nucleus. Oligodendroglioma. Yes, seen in oligodendroglioma. Good. ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ अ ब्रेन ट्यूमर, ऑलिगोडेंड्रोग्लाइकोमा, फ्राइड एग अपीयरेंस। कौन सी म्यूटेशन होती है? व्हाट इज द म्यूटेशन दैट हैपेंस इन ओडीजी? वेरी इंपॉर्टेंट म्यूटेशन, टेल मी द नेम ऑफ द म्यूटेशन। इज 1p19q co-deletion. Okay, this is a characteristic mutation of oligodendroglioma, very important from pathology point of view. ठीक है, I'm clubbing everything for you so that you form links in your brain. Don't get scared, don't get disheartened कि I don't remember these things, but this is very important. That is how you correlate. ठीक है, रेडियोलॉजी से पर से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आएंगे. Lot of it will be correlation, lot of it will be covered in clinical, but my aim in radiology is to sort of revise a lot of things for you. Okay, now next image, tell me what is this? 1, 2, 3. So what do I see? I see a lytic lesion in the epiphysis and metaphysis, okay, sort of including the both, Giant cell tumor. reaching till the articular surface. So this is giant cell tumor. Good. Similarly, I see a lytic lesion in the distal radius, reaching till the articular surface, involving the epiphysis and the metaphysis. And adult है, adult क्यों बोल रहे हैं? Because the growth plate is open, it is not fused. So what is this? This is also a giant cell tumor. But in comparison to this, see what is this? I can see the epiphysis separately, the metaphysis here. Similarly, I can see the epiphysis and the metaphysis separately here, right? So what is this? Aneurysmal bone cyst. This is an aneurysmal bone cyst. This is a lesion in the metaphysis. I can see the growth plate separately. So it is a child. In child में इसको हम बोलेंगे aneurysmal bone cyst. Everybody is clear on what we are talking? Soap bubble appearance, good. Kanish, Satyam, good. This is soap bubble appearance. This is we are talking about aneurysmal bone cyst. Now next, tell me the name of the sign and the diagnosis. Very typical characteristic sign. Sign, diagnosis, and tell me one syndrome also. ठीक है? Fibrous dysplasia, sir. Shepherd crook Group deformity. deformity. This is fibrous dysplasia. Good.
What is this syndrome? Which syndrome is McEwen fibrosis Albert. is McEwen associated with? Albert. This is McCune Albright syndrome. Now, bonus question. What are the three triads in McCune Albright syndrome? Anybody can answer? Kanish, tell me in the. Cafe Albert spot. Okay, one is cafe au lait spots, Puberty. Precocious puberty. precocious puberty. नेट पे देख के नहीं बोलना है, ठीक है? Fibrous And another one is polycystic. polyostotic. Polyostotic FD, fibrous dysplasia. ठीक है? Polyostotic meaning multiple bones have these fibrous dysplasia. ठीक है? Good, Satyam. This is McCune Albright syndrome. Very, very important. This has been asked previously, and you have to remember this. Okay, one more thing for FMG exam or MCI screening exam. Also do NEET PG PYQs, not just FMG PYQs. I'm sure you know this. कर रहे हो NEET PG PYQs भी? Are you doing NEET PG PYQs? Yes, you have to do NEET PG PYQs also. ठीक है? Good Parul. Yes, good Satyam. करने हैं. चलो next question बताओ. Easy. Location is metaphysis. Upper end of humerus is a characteristic location. Usually it is an adolescent. It is an adolescent. And what is the name of the sign? Fatafat. Fallen fragment sign. And then what is the diagnosis? Tell me quickly what is the diagnosis? Simple bone cyst. This is simple bone cyst. Okay, bonus question. Which is another sign in simple bone cyst? Can you tell me one more sign? Hinged door sign. Inged नहीं है. That is known as hinged. Okay. ठीक है? Hinged door sign. ठीक है? Good. Hinged door sign is seen in simple bone cyst. Okay, tell me. This is an adolescent with bone pains at night. Okay, sometimes in the question you are given the buzzword painful scoliosis. पेनफुल स्कोलियोसिस भी कभी कभी दिया होता है. सो क्या दिख रहा है हमें? वी आर सीइंग अ sclerotic lesion in the diaphysis which has a small nidus. Small radiolucent nidus. Similarly यहाँ पर हमें एक nidus मिल रहा है. इन चारों तरफ there is lot of sclerosis. What is this diagnosis quickly? Osteoid osteoma. This is osteoid osteoma. And what is this treatment which is being given? What is this treatment? I can see a needle going into the nidus. This is radio frequency ablation. This is radio frequency ablation of nidus. Okay, good. So we are done with our radiology bone tumors. Now one more bone tumor, very, very important bone tumor is left. What is this? What is the diagnosis? So I can see a sclerotic lesion in the metaphysis of fibula. It is showing me sunburst, Sunburst appearance. periosteal reaction. Diagnosis becomes Osteosarcoma. osteosarcoma. Okay, so osteosarcoma, osteoblastoma, chondroblastoma, GCT, ABC, very, very commonly asked. Very, very important. These should be at your fingertips. ठीक है? ये हमें गलती नहीं करनी है. These things we will not get wrong. Okay, these are easy questions, low hanging fruits. We have to revise this and go in the exam. Okay, next, tell me what is this name of the sign and the diagnosis. History में दे रखा होगा. There is a young male with low backache. Okay, ESR is high, CRP is high. Name of the sign is, this is dagger sign, and this is seen where diagnosis is ankylosing spondylitis.
Clear? Now, in comparison to this, what do you see? Here also you see some bony ankylosis happening in the cervical spine. But this is number one cervical spine and it is only involving the anterior part of this cervical spine. Okay, so this is a special condition. पुरानी वाली किस में हो रही थी? Young male में हो रही थी. This is happening in an elderly patient. This happens in an elderly patient. And it affects the cervical spine and there is calcification of anterior longitudinal ligament which is happening. What is the name of the sign? Flowing candle wax appearance. And the diagnosis is dish. Okay, dish की full form is asked. Sometimes full form is only asked in the question. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. Okay, another thing that you see in ankylosing spondylitis is sometimes you can be given an MRI of the foot, and here you see that this is the plantar fascia and there is pain in the heel. So there is history of heel pain. It is sometimes given. And what does MRI show you? MRI show you plantar fasciitis. Plantar fasciitis. Okay, so this is a little advanced image, might not be asked, but I wanted to give you something extra. Good Satyam, this is plantar fasciitis. There is tenderness in the heel. Why? Because at the insertion of this plantar fascia, there is some inflammation happening on. And what does this suggest? This suggests enthesitis, which is a hallmark of ankylosing spondylitis. All right. Chalo, next question. Name the sign and the diagnosis. Fish mouth appearance. What is this sign? Yes, this sign is fish mouth appearance of vertebra. And the diagnosis is osteoporosis. Osteoporosis. Okay, what is the investigation of choice? DEXA. Okay. Now, sometimes you're asked investigation of choice to diagnose compression fractures. Then the answer is MRI. ठीक है, तब डेक्सा नहीं है. सो डेक्सा क्या बताता है? हमें ओवरऑल बताता है. ओवरऑल डेक्सा टेल्स अस दैट बोन मिनरल डेंसिटी is less. And how much is less? T score less than minus 2.5 is diagnostic of osteoporosis. But in this reduced bone mineral density, are there any compression fractures which are painful? That is told by MRI. That is told by MRI. So remember, osteoporosis normally is a painless disease. As we grow older, our bone mineral density normally reduces. But there is only pain when there are compression fractures happening. And this is picked up by MRI, which shows us bone marrow edema. All right, DEXA scan, osteoporosis. Okay, compression fractures will diagnosed by MRI. Now let's annotate few important structures in the brain because again anatomy annotation is asked to you in the exam as well. So what is the sequence? First of all, tell me the name of the sequence. What is this modality? MRI or CT scan? Is it MRI or CT scan? MRI. Yes, the name of the modality is MRI. What is the sequence? T1, T2 flare. So what am I seeing? I am seeing that the CSF is bright. So water white on T2 weighted image. So this is a T2 weighted image. Okay. Now let's annotate each and everything. So this is our caudate nucleus. This
is putamen. The medial part of putamen is globus pallidus. Together they form lentiform nucleus. Then medially there is thalamus. Now in between these two, here we have internal capsule. This white structure in between is our third ventricle. And these are all the important structures that you see at this level. Now at the level of midbrain. Now I have come at the level of midbrain. So this whole thing is the midbrain. Okay. Now anterior to it, can you see two rounded structures? Tell me in the chat box, what are these? Tell me in the chat box. These two rounded structures are known as mammillary bodies. Okay, they are mammillary bodies. Now, where are they affected? They are affected in cases of Wernicke's encephalopathy. Okay, this is one spotter. Then can you see this black colored area? What is this black colored area? This is substantia nigra. Which disease is substantia nigra involved? Parkinson's. Parkinson's disease. Okay, so all these are radio anatomy physiology questions. These are the things that are asked nowadays. Integration के साथ ही पूछने वाले हैं सब लोग. Now these two black areas in the middle, this is red nucleus. ठीक है, अगर मिड ब्रेन, if inside the midbrain there are asking two black color structure, it is red nucleus. Outside in the interpedunclar fossa अगर पूछना है तो ये mammillary bodies है. ठीक है, both of them are separate, don't mix them. Okay, now let's come to our pons level. This is at the level of pons. What are the various structures? So this structure right here is our pons. This is the middle cerebellar peduncle. This is our fourth ventricle. Can you tell me what is this? This was asked in this year's exam. ठीक है, this is internal acoustic canal. This internal acoustic canal. Okay, these are the important structures at the level of pons. Now this is a sagittal T1 weighted image. And इसमें will label few important structures. First of all, tell me this, then this, so let's label them one by one. So सबसे ऊपर क्या है हमारा? At the top we have corpus callosum. Corpus callosum. Then below it, what do we have? What is the structure? This is the fornix. Then we have midbrain, pons, fourth ventricle, and finally medulla oblongata. Okay, clear? Everything is clear. Now let's move on to the next image. So easy peasy, history of head trauma. What is image number 1 and what is image number 2? Image number 1 में idli shaped or lenticular shaped, lens shaped, not crossing the suture. This is EDH. And what is happening here? There is also some midline shift. Okay, so कितना midline shift important है? Midline shift, what is it?
lucid inter So midline shift more than 5 mm is significant and is an indication for craniectomy. ठीक है, but if OT not available, then the only option we have here is burr hole. The image number 2 is FDH. Why FDH? Concave or convex bleed. It is crossing the sutures. This is FDH. This is FDH. Chalo, next question. Name of the sign and diagnosis. So this is starry sky, appearance of brain. What is the diagnosis? So forget starry sky. neurocystis. Yes. So what do you see? You see small tiny cysts in the brain, and in the center of the cyst you see a dot, black color dot. So cyst plus dot in the brain. We have neurocysticercosis. What is this dot? This is nothing but the scolex. Okay, next question. Name of the sign, image number 1, image number 2. Take a name of the sign and diagnosis. So this is an MRI of the brain, T1 weighted image, and I have given IV contrast. So what am I seeing? I am seeing a tumor in the CP angle, which is going into the internal auditory canal. ठीक है, what is this name of the sign? It is known as ice Ice cone appearance. bilateral आइसक्रीम कोन अपीयरेंस. एंड क्या डायग्नोसिस बनाएंगे हम इसमें? हम इसका भाई acoustic sonoma. अकूस्टिक श्वानोमा. अब ये बताओ, अगर दो दो आइसक्रीम आ गई दोनों साइड, एक आइसक्रीम यहाँ पर है और एक आइसक्रीम यहाँ पर है, तो कौन सा आप सिंड्रोम सस्पेक्ट करोगे? दैट इज आई एम आस्किंग यू, बायलैटरल अकूस्टिक श्वानोमा इज सीन इन विच कंडीशन? NF1 और NF2? बताओ सही. NF2, NF2 sir. Yes, bilateral are seen in NF2. Ice cream cone appearance. ठीक है, bilateral acoustic schwannoma. Now tell me this name of the sign and diagnosis. Bonus question asked previously, asked in last FMG exam only. MCA screening में ही पूछा गया ये. Yes. On YouTube somebody has said the name of the sign is dural tail sign and diagnosis is Meningioma. meningioma. मेल में मोर कॉमन और फीमेल में? फीमेल में मोर कॉमन. Female. Okay, now this has also been asked in last MCA screening exam. What is this? This is a neonate with respiratory distress at birth. What is the diagnosis? Congenital diaphragmatic hernia. What is the complication of congenital diaphragmatic hernia? This is CDH. Hypoglycemia. Complication is pulmonary hypoplasia. So initial management में हम क्या करेंगे? जब भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, we tend to do bag and mask, but in this condition bag and mask is contraindicated. The initial management will be endotracheal intubation. Because what is contraindicated? Bag and mask ventilation is contraindicated. ठीक है, avoid bag and mask. Manan, ठीक है, everybody knows the answers. Now, this is an infant with bloody diarrhea.
ठीक है, what is the diagnosis, what is the name of the sign? Quickly tell me. This is the Intersection claws. claw sign and this is coiled spring sign. I see them in intussusception. Similarly, what is being shown here? There is a liver cyst with multiple stages. This we are talking about hydatid cyst. What is the name of the classification? Garby's classification or WHO type or WHO classification. ठीक है, so unilocular cyst में is CE type 1. This is also known as Garby type 1. Then we have CE type 2 multilocular multiseptated daughter cyst. This is C type 2, but this is Garby type 3. Then you have a uh, water lily sign in which you get detached membrane. This is C3A. This is Garby type 2. ठीक है, so what is this name of the sign? This is water lily sign and this is honeycomb appearance. Okay, what is this? Come on, tell me. There's a CT also I've given you. There are two kidneys. This is an IVP image that I have shown you. And both the initial, yes, good. Both the calyces in the lower part are medially directed. So this is name of the sign is shaking hand sign, joining hand sign, yes. Shaking hand sign, also known as flower vase appearance. And the diagnosis is horse shoe kidney. ठीक है. Now name of the sign, ovaries दिखा रखी हैं and diagnosis. PCOS, sir. Okay, what is the sign? Necklace pulsing. Necklace or string of pearls. Sting or pearl. ठीक है, the diagnosis is PCOS. What is the name of the criteria? Rotterdam criteria. ठीक है, in a Rotterdam criteria, what are the essential criteria? Essential criteria is that ovarian volume should be more than 10 ml. Per ovary, volume should be more than 10 ml. ठीक है, another option gynae spotter. Tell me name of the sign, diagnosis. हिस्ट्री में क्या दे रखा होगा? यूपीटी पॉजिटिव है पेशेंट, एमेनोरिया है and on examination the fundal height is more than the period of gestation, meaning कि palpation per fundus is let's say 14 weeks but POG पे it is 10 weeks. Okay, so the name of the sign is bunch of grape appearance. Ectopic नहीं है, no. Obstructive No. pregnancy. Edit molar pregnancy. Yes, bunch of grape sign is molar pregnancy. Ectopic में क्या मिलता है हमें? एक्टॉपिक अगर होगी, ऑन अ साइड नोट, एक्टॉपिक में भी यूपीटी पॉजिटिव मिलेगा. देयर इज ब्लीडिंग पर वेजाइनम. इट्स अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीड एंड अल्ट्रासाउंड पर नेम ऑफ द साइन इज रिंग ऑफ फायर अपीयरेंस और ट्यूबल रिंग साइन. क्लियर भाई लोग? लेट्स गो अहेड. Okay, now revising the last year's FMG paper. What is this? Name of this sign, diagnosis.
Okay, history में I'll give you history of epistaxis in a child. Sir, coffee beans. First tell me this and then tell me this. What is fun? Yes, you are right. On YouTube, somebody has commented Hallman Angiofibroma. New JNA. This is Hallman Miller sign. Holler Miller Colon Hallman Miller sign. Okay, this is the tumor. This is bowing the posterior wall of maxillary sinus like this. So basically, CT में if you see a mass in the nasal cavity and going behind the maxilla, इस एरिया में इसको हम बोलते हैं टेरिगोपैलेटाइन फिशर या टेम्पोरोमैक्सिलरी फिशर. ठीक है, टेरिगोपैलेटाइन फॉसा भी बोलते हैं इसको. So this is diagnosis is JNA. Can someone tell me what's the name of the staging for JNA? Yes, this is contraindication for biopsy. Biopsy नहीं करनी है इसमें. Staging system बताओ कोई. Bonus question. Whereas somebody tell me what is the diagnosis in the second question. Name of the sign? Coffee bean sign. Sickle ball. No. Sigmoid. A sigmoid ball. Yes, coffee bean sign is seen in sigmoid. Sigmoid ball. Sigmoid what? Classification. JNA क्लासिफिकेशन का नाम है रेडकॉफ्स्की. रेडकॉफ्स्की's क्लासिफिकेशन. ठीक है, चलो. Now let's revise some anatomy. ठीक है, I've put in some anatomy questions. So first of all, we're discussing MRI. ठीक है, MRI of knee. This was asked in 2023 MCI screening paper. PCL labeling was asked. Right. So what is this? This ligament. देखो ये this is our femur. This is our tibia. If you see a ligament going from anterior part of tibia to the posterior part of femur, this is anterior cruciate ligament. ठीक है, सो एंटीरियर पोस्टीरियर किसके रिस्पेक्ट में है? इट इज विद रिस्पेक्ट टू टिबिया. सो टिबिया के एंटीरियर इज एसीएल, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. टिबिया के पोस्टीरियर कौन सा आ रहा है? दिस इज टिबिया, दिस इज फीमर. टिबिया के पोस्टीरियर जो आ रहा है लिगामेंट, दैट इज पीसीएल, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. एंड लैटरली कौन सा लिगामेंट आ रहा है? दिस लिगामेंट लैटरली. दिस इज लैटरल कोलैटरल लिगामेंट. And how will we guess lateral collateral ligament? It is not medial. Why is it lateral? Because I can see the fibula. And fibula, my friends, is a lateral bone. This is lateral collateral ligament. Okay, good. Jairam, good. Yes, don't worry, Tej. I'll share the PDF. Don't worry. I'll share the PDF. But it will be shared on the Telegram group. Okay, you'll have to join the Telegram group for the PDF. Okay, now this is a very, very important spotter. Very, very important spotter, has been asked multiple times in the exam. You can't afford to miss this. So history of back pain. ठीक है, and maybe paraparesis, low grade fever, weight loss. And what am I seeing? I am seeing that this is the bone which is getting infected and it is showing enhancement on post contrast images. This is pot spine. This is TB spine. ठीक है, good Tej. Now types of skull fractures have been asked previously, so I'm just giving you a snapshot. If you see a break in the cortex without any displacement of the bones, मतलब ये ऐसी बोन थी अब थोड़ी सेपरेट हो गई है बस. This is the linear fracture. If one of the fragment is depressed, then that is a depressed fracture. Now, if you get multiple fragments and these fragments are depressed, then that becomes a comminuted depressed fracture. Comminuted matlab multiple fragments and depressed meaning one of the bony fragment is
misaligned. This is terminated depressed. ठीक है, दिस इज ओपन एलिवेटेड लीनियर फ्रैक्चर एंड दिस इज अ बेसल लीनियर फ्रैक्चर कि बेस ऑफ द स्कल पे हो रहा है तो बेसल लीनियर फ्रैक्चर. नाउ टेल मी दिस नेम ऑफ दिस साइन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस एक्सरे व्यू? ऊपर देख रहा है पेशेंट, ऐसे कर रहा है, ठीक है. वाटर व्यू. दिस इज Water view. वाटर्स व्यू. वाटर व्यू. दिस इज वाटर्स व्यू. वाटर्स व्यू में हमें सबसे अच्छा क्या दिखता है? वी सी मैक्सिलरी साइनस. वी सी मैक्सिलरी साइनस वेस्ट. सो राइट साइड मैक्सिलरी साइनस में आप देखो, राइट साइड आई कैन ड्रॉ द आउटलाइन. देखो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं आउटलाइन ऑफ द मैक्सिलरी साइनस. बट लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? इफ आई स्टार्ट ड्रॉइंग द आउटलाइन, यहाँ पर देर इज सम हेजीनेस, मतलब देर इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ द maxillary sinus outline. So what is happening here? There is fracture of the floor of orbit. What is this sign known as? Teardrop sign. Teardrop sign. And what is the diagnosis? This is orbital floor नहीं, इसको हम बोलते हैं orbital blowout fracture. ठीक है, ऑर्बिटल ब्लोआउट का क्या मतलब है? मान लो लड़ाई हो रही है किसी की, ठीक है, लड़ रहे हैं सब, किसी ने आंख पे मुक्का मार दिया, तो किसी की आंख पे जब ऐसे बहुत तेज प्रेशर लगेगा, इंट्रा ऑर्बिटल प्रेशर एकदम से बढ़ता है. जो वीकेस्ट वॉल होती है ऑर्बिट की वो इंफीरियर वॉल होती है, विच इज दिस फ्लोर ऑफ ऑर्बिट. एंड इसीलिए जब ब्लो पड़ता है आग पे, द इंफीरियर वॉल फ्रैक्चर. दिस इज दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ऑर्बिटल ब्लो आउट फ्रैक्चर. ठीक है, दिस इज द मीनिंग. नेम ऑफ द साइन इज टीयर ड्रॉप साइन एंड यू कैन ऑल्सो सी ऑन द कोरोनल CT स्कैन that there is this fracture and you see herniation of orbital contents into the maxillary sinus. Now question is asked, most common muscle entrapped in orbital blowout fracture. What is the most common muscle involved? Tell me. अब inferiorly कौन सी मसल होगी? देखो एक ही मसल ये, सुपीरियर रेक्टस, लैटरल रेक्टस, मिडिल रेक्टस. यहाँ पर कौन सी रेक्टस है? इंफीरियर रेक्टस ही है ना, तो इंफीरियर रेक्टस Inferior. इंट्रैप होगी. सो विच इज द मोस्ट कॉमन मसल इंट्रैप्ड इन ऑर्बिटल ब्लोआउट फ्रैक्चर? इट इज द इंफीरियर रेक्टस मसल. ठीक है, से विद मी, जो मैं बोल रहा हूँ बोलो, तभी रिवाइज होगा, तभी दोबारा बार बार रिवाइज होगा, डरना नहीं है. ठीक है, स्पीक विद मी, देन ओनली यूल रिमेंबर. Inferior rectus muscle is the most common muscle entrapped in orbital blowout fracture. Right? So this was a small 1 hour session. We covered around 30 images in today's session. And please do revise this PDF. It will take you less than an hour, half an hour you will revise everything, and 10 questions will come from this PDF. Okay? So I hope you liked today's session. And if you have any queries regarding the exam, you want to ask something regarding preparation, please ask me. I'm here for you. I'll share this PDF. Don't worry. Okay, Tej is asking, sir, can you please repeat the ACL? Okay, I'll tell you. So ACL question was asked in FMG screening exam, MCA screening exam. And what is the trick to identify whether this is ACL or PCL? So ACL full form is what? Anterior cruciate ligament. So anterior meaning it will attach anterior part of tibia. This is tibia. So anterior में जो attach हो रहा है tibia पे, that is your ACL. Posterior पे जो attach हो रहा है tibia पे, that is your PCL or posterior cruciate ligament. ठीक है, so this is the funda of ACL and PCL. So can you please tell me the difference between EDH image and the SEH SDH image? image. So बड़े को बोलेंगे. ठीक है. So EDH में क्या होता है? EDH में हमारा अगर ये स्कल है, स्कल के अंदर वी हैव अ ड्यूरा, ड्यूरा के अंदर वी हैव एरिकनॉइड, एंड देन वी हैव पाया मैटर, पाया मैटर सराउंड्स आवर ब्रेन. सो एक तो ड्यूरा क्या करता है? ड्यूरा अटैचेस टू द पेरियोस्टियम एट द लेवल ऑफ सूचर. सो अगर यहाँ पर सूचर्स हैं, तो यहाँ पर क्या होगा?
ड्यूरा विल बी अटैच टू द पेरियोस्टियम। मैं इसको बना देता हूँ अलग से। मान लो यहाँ पर एक सूचर है, ये सूचर है, एक फ्रंटल बोन था, टेम्पोरल बोन है, यहाँ पर एक सूचर है, फिर ये पैराइटल बोन है, यहाँ पर सूचर है, और ये ऑक्सीपिटल बोन है। तो ये दो सूचर है। अब इसमें हमारी ड्यूरा मैटर कहाँ रहती है? ड्यूरा मैटर लाइफ लाइक दिस, ऐसी होती है हमारी ड्यूरा मैटर एक्चुअली में। सो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज कैसी होगी? एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज भी इसी की शेप लेगी, आउटसाइड द ड्यूरा। ठीक है, तभी बोलते हैं ईडीएच हैज अ बाय कॉन्वेक्स शेप, कि एक साइड भी गोल दूसरी साइड भी गोल। दिस इज नोन एज इडली शेप ऑल्सो, लेंटिकुलर शेप, वट एवर शेप यू वॉन्ट टू से, बट बाय कॉन्वेक्स, नंबर वन। दूसरा, इट डज नॉट क्रॉस द suture. Why? Because at the level of sutures, periosteum and dura are fused with each other, so it will be limited by sutures. ठीक है, बट कैन इट क्रॉस द मिड लाइन? देखो ये मिड लाइन है मेरी, क्या मेरी ईडीएच मिड लाइन क्रॉस कर रही है? हाँ या ना बोलो। नो सर। कर रही है, मिड लाइन क्रॉस तो हो रही है, मिड लाइन ही है ना ये, दिस इज द मिड लाइन, इट इज क्रॉसिंग द मिड लाइन। सो मिड लाइन क्रॉस करेगी बट सूचर्स नहीं क्रॉस करेगी। सो ईडीएच क्रॉसेस मिड लाइन, it does not cross sutures। ठीक है, यस सर। बल्कि एफडीएच क्या, अब एफडीएच की कहानी सुनो। सब ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल मतलब ड्यूरा के नीचे, ड्यूरा के नीचे मतलब ये वाला पार्ट, ये ड्यूरा है उसके नीचे जा रहा है। तो हमारी जो सब ड्यूरल हेमरेज होती है वो सूचर्स क्रॉस कर देती है। तो इसकी शेप कैसी बनती है हमारी? लेंटिकुलर शेप, ऐसे, सॉरी, इसकी बनती है बनाना शेप, सिक्कल शेप, की एक जगह से कॉनकेव होगी दूसरी जगह कॉन्वेक्स होगी। तो एफडीएच के पॉइंटर्स में आएगा हमारा कॉनकेवो convex bleed, also known as banana shaped bleed। ठीक है, does it cross sutures? Yes, यस सर। crosses sutures, but remember it does not cross midline। ठीक है, क्रिसेंट शेप भी बोल दो इसको। ठीक है, ठीक है भाई लोग, क्लियर है? एफडीएच ईडीएच का बड़ा ही आसान सा फंडा है, एक बार समझ जाओ कि ड्यूरा एट द लेवल ऑफ सूचर्स ब्रेन स्कल से फ्यूज होती है, तो क्रॉस ही नहीं कर पाएगी सूचर्स को। गॉट इट सर, थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चंस? सर सीटी में वो सारे ऑर्गन्स कैसे देखे, एक बार अच्छे से बता सकते हैं क्या? सीटी स्कैन में है। हाँ जी। चलो एक बार ऑर्गन देख ही लेते हैं, फिर साथ में देख लेते हैं। चलो, कैन यू टेल मी नाउ, कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। तो इसमें ना ऑलरेडी लेबल्ड कर रखा है सब। तो फर्स्ट बताओ 3 क्या है, व्हाट इज 3? व्हाट इज लेबल्ड एज 3? इज इट स्टमक? नो, दिस इज द लिवर, राइट साइड है हमारी, दिस इज द राइट साइड, और दूसरी लेफ्ट साइड है। राइट साइड पे बड़ा सा ऑर्गन इज द लिवर। ठीक है, नाउ फोर्थ बताओ। फोर्थ एक वेसल है विच इज पासिंग थ्रू द लिवर, देयर इज अ वेसल लेबल्ड फोर्थ विच इज पासिंग थ्रू द लिवर, एंड इट इज गिविंग ऑफ सम वेन्स इन द liver also। What is fourth? इंफीरियर वेना केवा। Good. This is inferior vena cava. And what are these veins that you can see coming out? ठीक है, these are the hepatic veins। ठीक है, ये जो 6 लेबल्ड है ना यहाँ पे, 6th 8th, ये देखो 6th था यहाँ पे लेबल्ड, give me this 6th। 6th is right hepatic vein, 5th is left hepatic vein, and 8th is middle hepatic vein। ठीक है, nobody is gonna ask you these right left middle, but still I am telling you these
vessel which is joining into the IVC, these are the hepatic veins, right? Now let's come below. ये 16 देखो अब, wait, देख, this 16th is labeled, ठीक है? This is another vessel which is passing into the liver, but this is a big vessel now, and हम थोड़ा नीचे आ गए हैं. We have come a little less lower down. This is the portal vein, left portal vein, ठीक है? पोर्टल वेन कैसे करते हैं? लेफ्ट में और राइट में डिवाइड होती है, दोनों जब जुड़ जाएंगे देन दैट विल बी द मेन पोर्टल वेन. ये मेन पोर्टल वेन है, एक लेफ्ट है और एक राइट है. देखो जुड़ेंगी, अब ये लेफ्ट जुड़ेगी, ये राइट में, 20th इज राइट, 20th इज राइट, एंड अब देखो ये कॉमन बन गई, दिस 37, दिस 37 इज योर पोर्टल वेन, मेन पोर्टल वेन. ठीक है, ये क्लियर है पार्ट? मेन पोर्टल वेन लेफ्ट में एंड राइट में डिवाइड कर रही है. नाउ टेल मी व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, आई कांट लेबल इट है. एक wait, tell me what is labeled as 42. What is the 42 marked structure? What is marked as 42? Gallbladder. Yes, 42 is the gall bladder. ठीक है, गॉल ब्लैडर यहाँ पर दिखता है हमें लिवर में. Okay, now what is this structure marked as 30? This structure एयर कंटेनिंग स्ट्रक्चर है, लिवर के जस्ट टच कर रहा है उसको. दिस इज द स्टमक, स्टमक में एयर होती है हमारे यहाँ पे ना, उस लेवल पे स्टमक. गुड तेज, गुड, दिस इज स्टमक. नाउ टेल मी गाइस, कैन समवन टेल मी व्हाट इज लेबल्ड एज 32? देयर इज एन ऑर्गन, पूरा बड़ा सा एक ऑर्गन है, 32 स्टमक के बिल्कुल पीछे है, स्टमक के जस्ट बिहाइंड द स्टमक. जयराम, यस, गुड. बताओ व्हाट इज दिस? 32 is the pancreas. Okay, 32 is Pancreas. the pancreas. Yes, this is the pancreas. Now what is 14? Spleen. 14 is the spleen. Yes, 14 is spleen. Now let's go down below. What is 55? 55 is the left kidney. Left kidney. And again, this is the right kidney. Can you see? इसको label नहीं कर रखा है किसी ने right kidney को. Now lastly we'll talk about aorta. तो 53 labeled है, 53 is the aorta. ठीक है, so at this level you should be able to identify these structures. These structures you should be able to identify. ठीक है, now sometimes you're also asked about the various structures of the heart, chambers of the heart. So let me just show you the images and then we'll label it. So let me copy this image and then this is more helpful. Just give me a minute. So this is the heart structure. We are coming from top to down now. ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम. So let's label each and everything.
This is the aorta, which is the biggest artery. Now, what is the posterior most chamber? This is your left atrium. This is the left atrium. This is the ascending aorta, and this is the main pulmonary artery. Main pulmonary artery. Now, the second image में क्या है? This is my descending aorta. Again, what is this chamber? Tell me, what is this chamber that I have put an arrow on? Most posterior structure. What is the most posterior chamber in the heart? Very, very important. Take a speak up, speak up. What is this chamber that I have marked? No, this is not LV, Ashish. This is not LV. Left ventricle नहीं है. Remember, the most posterior structure in the heart is the left atrium. Okay, this is the left atrium. Remember this. Very, very important chamber. Has been asked multiple times in the exam. Arrow put up कर देते हैं and they ask you what is this chamber. ठीक है, this is my left atrium. ठीक है, nobody will get this wrong. Most posterior chamber in the heart is left atrium. Now let's label other chambers. This is my right atrium. This is right ventricle. एंड ये छोटा सा भी आएगा यहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा. एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से यू कैन सी व्हाट इज ओरिजिनेटिंग, व्हाट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल? असेंडिंग एओर्टा. ठीक है. नाउ आगे और आते हैं, और थोड़ा नीचे आ जाते हैं. अब चेंबर्स विल बी मोर क्लियर. दिस इज एओर्टा. व्हाट इज दिस मोस्ट पोस्टीरियर चेंबर ऑफ द हार्ट? टेल मी व्हाट इज दिस मोस्ट पोस्टीरियर चेंबर ऑफ द हार्ट? आई एम वेटिंग. Left atrium. लेफ्ट एट्रियम. गुड, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम. नाउ बताओ ये कौन सा चेंबर है? राइट साइड. Right Right. atrium. Right atrium. Shabash. What is this anterior most chamber? The right ventricle. Right ventricle. Right Shabash. So two questions will straight away answer here. Which is the anterior most chamber of the heart on CT scan? Right ventricle. Which is the posterior Right most ventricle. chamber of the heart on CT scan? Posterior most chamber? Left Left atrium. ठीक है. सो आगे से हम ये गलती कभी नहीं करेंगे. विल नॉट मेक दिस मिस्टेक. एंटीरियर मोस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट इज राइट वेंट्रिकल. पोस्टीरियर मोस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट इज लेफ्ट एट्रियम. And what forms the left heart border? This big ventricle. This is my left ventricle. ठीक है सर? ठीक है सर. Now tell me, this is our aorta. अब दोनों ventricles आ गए हैं. Why? Because now I can see thick muscles. So this is my left ventricle and this is my right ventricle. Both are ventricles. Now, again, this is aorta. I can see some veins opening into a chamber. So what is this chamber now? You guys know the answer already. Posterior most chamber of the heart. Bicus. लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम. ठीक है. एंड अगेन मैंने फिर से आपको असेंडिंग एओर्टा दिखा दी यहाँ पे. आई एम शोइंग यू असेंडिंग एओर्टा अगेन. एंड दिस इज योर मेन पल्मनरी आर्टरी. एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, सॉरी, ये दिस इज राइट एट्रियम. ठीक है. अगेन आई एम लेबलिंग दिस. दिस इज लेफ्ट एट्रियम. दिस इज योर असेंडिंग एओर्टा. दिस इज मेन पल्मनरी आर्टरी एंड दिस इज राइट एट्रियम. अगेन this is left atrium, right atrium, right ventricle and left ventricle. ठीक है. दिस इज द मोस्ट कॉमन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज. ये इमेज हमेशा अपने दिमाग में रख लो. ठीक है, ये इमेज आएगी ही आएगी. Okay, so again final image. This is left ventricle, this is right ventricle and this is IVC. ये right atrium में खुल रही है IVC and this is aorta. Okay, so if you were to remember just one image of the heart, this is the cardiac anatomy. And again, left atrium is the most common structure which is asked multiple times in the exam.
ठीक है, एनी अदर डाउट? लेट्स रिवाइज, एनी अदर क्वेरी यू हैव? The artery which is associated with the heart, like left circumflex artery, sometimes like it's confusing. लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स तो एनाटॉमी में पढ़ाते हैं, मतलब आई टेल यू, कोरोनरी। सर उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। सीटी में तो नहीं पूछते कभी, एनाटॉमी में, सीटी में तो कभी नहीं पूछा कोरोनरी आर्टरी। यही है सिंपल। आप सीटी का पूछ रहे हो? ठीक है, राइट साइड ऑफ द हार्ट में राइट कॉर्नरी आएगी बड़ी सी, दिस इज द राइट कॉर्नरी आर्टरी। फिर लेफ्ट कॉर्नरी दो में डिवाइड होती है, द स्ट्रेट वन विच इज एलएडी एंड द पोस्टीरियर वन, द lateral one, this is the circumflex. सर एंजियोग्राफी की इमेज होती है उस। एंजियोग्राफिक इमेज नहीं पूछेंगे, 100% श्योर हूँ मैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, एनी अदर क्वेरी? वी हैव अराउंड 30 स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइंड विद अस ऑन यूट्यूब। गाइस, डू यू हैव एनी क्वेरी? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट देन। ठीक है, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर ऑफ योर टाइम। 1 hour सेशन, क्विक रेडियोलॉजी रिव्यू वी हैव डन, मेनी इमेजेस वी हैव सीन। आई एम श्योर 10 इमेजेस में से पक्का आएंगी, 30 इमेजेस में से। ठीक है, ब्रेन फिलेटल इमेज हमने पढ़ लिया है तेज, दोबारा नहीं पढ़ेंगे उसको। दिस वी हैव डन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट section of the brain, you all should remember. How we extract pyts from pyqs? Pyt from pyqs, for example, let's say if you are asked about this section of the brain, identify the structure marked by blue arrow, ये पूछा है, that means that anatomy of brain is important, right? That does not mean that this section is important. So that means what is important? pyt, mr, images of the brain. ठीक है, दैट मीन्स दैट। अब न्यूमोथोरैक्स हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स, कभी कभी उसका एक्सरे पूछ लेते हैं, कभी सीटी स्कैन पूछ लेते हैं, कभी मैनेजमेंट पूछ लेते हैं। दैट मीन्स न्यूमोथोरैक्स यू हैव टू रिवाइज एंटायरली फ्रॉम सर्जरी, फ्रॉम रेडियोलॉजी। क्रेनियोटमी वर्सेस क्रेनिएक्टमी डिफरेंस। सो इफ यू हैव अ स्कल, यहाँ पर ईडीएच है आपका, व्हाट इज क्रेनियोटमी? ऑटमी मीन्स आई हैव ओपनड दिस, सो आई टेक आउट दिस बोन, I'll take out this bone, evacuate the hematoma, and then put the bone back. This is craniotomy. Craniectomy is what? I'll take out this bone, leave this open because there is a lot of brain pressure, ICP बहुत high है, and maybe later close it with a separate bone or put in a mesh. तो ऑटमी में क्या किया हमने? बोन हटाई, इवैक्यूएट करा, दोबारा रख दी। क्रेनिएक्टमी में बोन हटाई और टाके ही छोड़ दी, दिस क्रेनिएक्टमी। Sir, is there any possibility that some INSVT question will come in the FMGE exam? सो देखो, क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं। आई वुड से दैट आईएनआईसीटी पढ़ोगे ना, यू विल गेट लॉट ऑफ एंग्जाइटी, बिकॉज उस लेवल के Okay, sir. क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आते, उस फॉर्मेट में क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते कि मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं, मैच द फॉलोइंग, कम आते हैं ऐसे, उसका एंग्जाइटी ज़्यादा हो जाती है। सो आई टेल स्टूडेंट्स कि नीट पीजीएन एफएमजी के पेपर करो। अब आईएनआईसीटी से आ गया तो आ गया, बट ऐसा नहीं है कि फिर आप उस सारे करने लग जाओ, बिकॉज देन यू विल बिकम एंग्शियस। Okay, sir. Thank you.
Okay, guys, so we'll wrap up today's session. Thank you so much for joining in. All the very best for the upcoming exam. If you want any more radiology session, please mention them on the group. Maybe I'll take some more session if you guys want. And I'll see you guys later then. Okay, so we have a FMG Radiology TND also planned in December. All of you who have joined the FMG Sankalp batch, you will be able to access that radiology test and discussion. And we'll do few more questions there. Now, one of the questions asked on YouTube is Pulkit पूछ रहा है, sir, I was reading Robbins. I want to ask how to revise that. So Robbins, देखो, मैं तो मेन टेक्स्ट बुक से ही करता था Robbins. I had this big Robbins. I had broken it down into 3 parts because it was difficult to carry, and I used to revise it from Robbins because AIMS में the trend was they used to ask questions in the prof from Robbins only. So I had to revise Robbins, right? So I had to revise through underlining and writing important stuff. If you don't want to revise from Robbins, maybe you can take a help of the revision notes. But I'd strongly recommend that you revise it from the source. हाँ, लास्ट एफएमजी एग्जाम में हिस्टोलॉजी क्वेश्चन 3 सेम नीट क्वेश्चन दे दिए थे. हाँ, तो नीट के करने हैं ना, तभी मैं बोल रहा हूँ यू हैव टू डू नीट क्वेश्चंस. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम एंड आई सी यू गाइस लेटर. बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय. अभी फर्स्ट एड नहीं यूज करनी है. पुलकित, तुम पूछ रहे हो ना ये चीज, फर्स्ट एड नहीं यूज करनी है अभी तुम्हें. चलो, डीएम में पूछो, बात करो पुलकित. ठीक है, अभी एफएमजी वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे. चलो, आई विल सी यू गाइस लेटर ऑन. बाय बाय.